सो हे गाइस, न्यूज़ वायर तो फसम बात एक मिनट में जरा वो डालू। लेट्स गो। ओ किथे पीछे तुरती अब है मैजिकल होंदा सतारा विच ने है मैजिकल तेरे कार के गण तेरे अंदर। तुरती अब है मैजिकल होंदा सतारा विच ने है मैजिकल तेरे कार के गण साटेरी चल। ऑडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दो गाइस। ऑडियो ऑडियो सब क्लियर है? रुक जा मैं एक बार देख लूं। ऑडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दो गाइस। ऑडियो ऑडियो सब क्लियर है? आई गेट। मैं एक बार देख लूं। आई गेस अभी ठीक होगी मेरे हिसाब से। सुन लेता हूँ। ठीक तो नहीं चाहिए। आई गेस अभी ठीक होगी मेरे हिसाब से। सुन लेता हूँ। ठीक तो नहीं चाहिए। अभी आई गेस थोड़ी बेटर होगी शायद। ठीक तो नहीं चाहिए। अभी आई गेस थोड़ी बेटर होगी शायद। ना 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 ये वाला दिस। हाँ छोड़ो यार। इसको ऐसे ही रखते अभी बेस्ट साउंड आता है। ना 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 ये वाला दिस। हाँ छोड़ो यार। इसको ऐसे ही रखते अभी बेस्ट साउंड आता है। ना 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 ये वाला। या चलो अभी नाउ साउंड इज गुड आई गेस। पीछे पीछे तुरती अफे मैजिकल। हाँ तो जैसा गाइस तुम लोग ने आज टाइटल पढ़ा है, वी आर गोना डू कोडिंग। ओके, तुम लोग को भी कोडर बनना है तो बता दो। क्या मतलब बाकी की तरह मैं भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा बट मेरे को कुछ नहीं आता। हाँ हाँ तो सब छोड़ो, ठीक है। डिस्कॉर्ड नाम का एक ऐप होता है, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन मारो फटाफट। आओ सालों। कैरी मिनाटी के बारे हेलो में मोनू आपको पता होगा। गेमिंग, वो जो मर गया। हाँ मजा आ गया भाई। यादव का एक फैन का वीडियो मजा आ गया भाई। फर्स्ट डे। ओके देन ये एलविश देखूंगा। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या वाला, तो उसी से रिलेटेड ना किसी ने सुपर चैट किया था कैरी मिनाटी को, तो उनका रिएक्शन क्या था आप खुद देखिए। कैरी सल सॉरी कल और परसों नहीं आ पाया। होप यू रिमेंबर मी। एग्जाम चल रहे हैं और बताओ भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये एलविश भाई पता नहीं। ओके नहीं भाई टेंशन मत ले, तेरे को बिल्कुल मिस नहीं किया।
और भी लोग देखते हैं स्ट्रीम किस्मत से, तो इतनी ज्यादा मिसिंग नहीं हुई। Also guys, आपको पता होगा एल्विश यादव से रिलेटेड वायरल वीडियो, एल्विश भाई सुकुना ने हरा दिया। अरे सुकुना इज गॉड, उस जिस वर्ल्ड में है वो जुजुत्सु काइसन वाले वर्ल्ड का गॉड है। के आगे कोई बोल सकता है क्या वाला वीडियो। तो वो जो बंदा जिसने ये बोला था ना, उसने रिएक्ट करा जो उसके ऊपर मीम्स वगैरह कि ये टाइम पे मैं बहुत गंदा ट्रोल हो चुका हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा है एल्विश भाई ने बोल के, और भी कुछ अच्छा भी हो रहा है। बट है ना, मेरे को ना अभी एक गाना याद आ रहा है। मैं बोलूँ क्या? सुनो किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे एल्विश भाई। Also guys, एल्विश यादव एंड ए भाई, ये सुकुना के साइड हो या कुछ, ऑब्वियसली सुकुना भाई। जब से मैं वो एनीमे देखा हूँ, जब से पहली बार मैं सुकुना को देखा, पागल हो गया मैं उसके पीछे। सरानी फाइनली मिल चुका है। इसी से रिलेटेड एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे, फोटो पोस्ट किए थे। उसमें आप देख सकते हो 15 आवर्स के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 4 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। सेम बीआरपी मतलब एंड इतना ही नहीं, 18 मिनट्स के अंदर अंदर उस बस पोस्ट आज में कोडिंग 1 करें। मिलियन लाइक्स हो गए थे। एंड इसी के साथ एल्विश यादव का ये पोस्ट बन चुका है थर्ड फास्टेस्ट पोस्ट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स। यस, पहले नंबर पर उनका ही रिकॉर्ड है जो वो बिग बॉस जीतने के बाद फोटो पोस्ट किए थे, उसमें 8 मिनट के अंदर अंदर 1 मिलियन लाइक्स हो गए थे। इसके बाद है विराट कोहली का वेडिंग पिक्चर जिसमें 11 मिनट्स के अंदर अंदर 1 मिलियन लाइक्स हुए थे। एंड इसके बाद ये वाला है 18 मिनट के अंदर अंदर। और नीचे उन्होंने कॉमेंट पिन किया हुआ जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ आ गया स्वाद। तो क्या यहाँ पे वो फिर से पोक कर रहे फुकरा इंसान को? क्या लगता है आप लोगों को? कॉमेंट करके जरूर से बताना। और आपको पता होगा बहुत सारे लोग चाहते थे ना कि एल्विश यादव और मनीषा रानी मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि उनके बीच कुछ तो मतलब हुआ है। लोग ऐसे कमेंट अरे यार क्या चूतिया है क्या मेरा मनीषा फोन। रानी से मिले। उसके बाद कटारिया अपने व्लॉग में ये कहे मेरे पे जो हिट पड़ रहा था कि आप मनीषा को नहीं मिलवा रहे हैं एल्विश से, भाई मैंने मिलवा दिया। मेरे को हिट देना बंद करिए प्लीज। और जो एल्विश यादव का कुछ तो एक इशू हो गया विस्तारा के साथ। बोले कि हाईली डिसअपॉइंटेड, वुड नॉट रिकमेंड ट्रैवलिंग बाय विस्तारा। फ्लाइट नंबर भी होती है ना, आप देख सकते हो। उसी के नीचे विस्तारा ने रिप्लाई दिया, हाय एल्विश, इट कंसर्न्स अस टू हियर योर फीडबैक। वी ऑलवेज वांट यू टू हैव द परफेक्ट विस्तारा एक्सपीरियंस। प्लीज शेयर ए कन्वीनियंट टाइम। एंड वही नीचे मतलब डीएम वगैरह में बात करो ऐसा करके ना कि क्या हुआ। अब पता नहीं आज कोडिंग करे क्या इधर। और जो कंट्रोवर्सी चल रहा फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव के बीच में नेगेटिव पीआर का, उससे रिलेटेड जिया शंकर ने रिएक्ट करा एक इंटरव्यू में। रिपोर्टर नहीं पता कुछ हो सकते हैं, उससे फर्क भी वो बताएगी जब मुझे बता। आज कोडिंग करूँ क्या मैं लाइव पे? मजा आ जाएगा तुम लोग को भी। प्यार हो जाएगा जब मेरा बॉयफ्रेंड मिलेगा तब मैं सबको बताऊंगी ऐसा करके ना। और जो बेबिका ने भी जो एक इंटरव्यू में फुकरा इंसान के बारे में रिएक्ट करा ना, वो कही अभिषेक मल्हान जो एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो अच्छा बनने का एक्टिंग करता है बट पीठ पीछे वो जो है लोगों का बैक बिचिंग करता है। वो बताई कि फुकरा इंसान के जो रोस्टिंग एंड रिएक्शन वीडियोस है उसमें वो मेरा नाम लेना चालू किया एंड मेरे ऊपर कंटिन्यूअसली नेगेटिव कमेंट्स किए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ दोस्त नहीं हो सकती। वो कही आई वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आई लुक अप टू और बी लाइक देम। इसलिए मैंने पूजा मैम एंड साइरस सर को चुना। मैं अभिषेक के साथ दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती। He is very sweet on the face, but when it is about personal gain, he talks negatively or in an insulting manner. That's why I distanced myself from. हाँ भाई करो, चलो ये वीडियो देखने के बाद करते हैं, ठीक है। शादी कब कर रहे हो? तुम्हें क्या जल्दी है मेरी शादी करवाने की यार? शादी के बाद तुम समझो, शादी के बाद ये स्ट्रीमिंग वीमिंग इतना कैसे, मैं इतनी वीडियोस वगैरह कैसे बना पाऊंगा? इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ये सब फलाना XYZ चीजें होने लग जाती है। तो शादी के बाद मैं वीडियो वगैरह इतना नहीं कर पाऊंगा ना। तो तुम नहीं चाहते? ड्रिंक मोर वाटर। मेरे को लग ही रहा है कि पानी की वजह से ही हो रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली जो एक स्टोरी पोस्ट की to help if your messages get unanswered. Thank you for अंकित बयानपुरिया से रिलेटेड, जहाँ पे उसने जो अंकित बयानपुरिया का एक फोटो शेयर किया जो उन्होंने पोस्ट किया था जब उनको गोल्ड प्ले बटन रिसीव हुआ था ना, उनके पेरेंट्स के साथ उन्होंने पोस्ट किया था। वो कही आज पुनीत सुपरस्टार के लिए इज्जत बढ़ गई। तो शायद से यहाँ पे वो ये बताना चाहती है कि अंकित बयानपुरिया इतना कमा रहे अभी, फिर भी वो अच्छे कपड़े नहीं ला के दे रहे उनके पेरेंट्स को। इसके बाद क्या है भाई, उस ट्वीट के नीचे मैंने एक भी उस लड़की के सपोर्ट। हाँ रुक जा, पढ़ते। At least he doesn't post quote with your mirror selfie is the only content to get it. YouTube payout keeps
लेकिन तुम्हारे लिए किसी काम नहीं देखा। ऑफ कोर्स आपको पता होगा अंकित बैनपुरिया को बोला और जाता है बताओ भाई मोनू भाई, क्या हाल चाल? बहुत टाइम बाद आए हो। वो एकमात्र ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है विद जीरो हेटर्स, और यहाँ पे दो चार निकल ही आते हैं। वहाँ पे नीचे भाई सारे लोग उस लड़की को गाली दे रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बाकी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इंडियन मनी हाइस्ट के बारे में। मनी हाइस्ट सीरीज आपने जरूर से देखा होगा। देखो ना जयपुर में क्या करता है ना, उसने मनी हाइस्ट का कॉस्ट्यूम पहना है, वो एक कार के ऊपर खड़ा होता है। मुझे अपडेट के बारे में बात करेंगे। एमएस धोनी के बारे में। एमएस धोनी का न्यू हेयर स्टाइल अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कुछ पिक्चर्स ये अच्छा है। वायरल हो रहे हैं, उनका जो हेयर स्टाइल वो काफी लोगों को पसंद आया। पता है ये हेयर स्टाइल कहां से इंस्पायर्ड है? जिन्होंने हेयर स्टाइल बनाया ना आलिम हकीम, उन्होंने बताया ये जो हेयर स्टाइल है इंस्पायर्ड बाय फैन मेड इमेज। जैसे मैं खुद को फैन मेड इमेज दिखाया ना वो हेयर स्टाइल, इसको उसी हिसाब से उनका हेयर स्टाइल डिजाइन किया। चलिए बाकी अपडेट के बारे में बात करेंगे। यशराज मुखाटे के बारे में। यशराज मुखाटे का भाई एक ऐड आउट हुआ, पता किसके साथ? वो है भाई विराट कोहली के साथ। वो किसका ऐड है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले। चलिए बाकी अपडेट के बारे में बात करेंगे। मुंबई पुलिस के बारे में। अरे भाई पता किसके साथ? वो है भाई विराट कोहली के साथ। वो किस चीज का ऐड है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले भाई। चलिए टू या अगली ये अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक मुंबई पुलिस के बारे में जिनका एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ना, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो गोल्डमैन रहते, जो स्टैचू बन के नहीं रहते, उनको जो वो काफी बुरी तरीके से है ना, वहाँ पे काफी सारे लोग रोक रहे थे, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले नहीं मानते। ऐसे वीडियो बता दो बैंड्रा बैंड स्टैंड का है। इसके बाद क्या था भाई, वो पुलिस वाले को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे। बेसिकली लोगों का ये कहना है कि वो जो कर रहा है वो करके वो जो अपना पेट पाल रहा है, अपने घर वालों को पाल रहा है, तो पुलिस को क्या दिक्कत है? उसने किसी को डिस्टर्ब भी तो किया नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है मुंबई में, वो सब चीजों में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एंड यहाँ पे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ऐसा करके ना। क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। फ्लाइंग बीस्ट का सीरीज देश का धोनी के बारे में। तो अभी ना आप जो देश का धोनी को IMDb में भी रेटिंग्स दे सकते हो। तो पता है अभी IMDb में कितना रेटिंग्स मिला हुआ है देश का धोनी को? वहाँ पे 1100 लोगों ने रेटिंग्स दिया एंड 10 आउट ऑफ 9.4 है अभी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। MBA चाय वाला के बारे में। तो MBA चाय वाला ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे एक स्टोरी पोस्ट किए थे ये पूछते हुए कि गेस द प्लेस ना। तो किसी ने कहा पनौती, तो उसका MBA चाय वाला कहे पनौती इज अ टाइटल नॉट अ प्लेस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड जाने जाते क्रेजी चीजें करने के लिए, आपको पता होगा। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मतलब काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया। उन्होंने एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट किया अपने ही रूम में। जैसे वीडियो क्लिप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या हो रखा है, जैसे उनका हालत भी खराब हो रखा है भाई। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वहां पे कुछ तो डाल दिया, इसके बाद वहां पूरा रूम धुआं धुआं हो गया ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग आपको पता होगा, मैंने कुछ न्यूज़ दिया था कि इनका चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया। उनके चैनल पर कुछ स्ट्राइक वार्निंग कुछ भी नहीं आया, डायरेक्टली YouTube ने उनका चैनल को हटा दिया। इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे, ट्वीट किए थे, उन्होंने रिव्यू के लिए भी भेज दिया। तो अभी उसका रिव्यू हो चुका है, उनका चैनल वापस नहीं आने वाला। YouTube का मेल आ चुका है, जहां पे लिखा गया वी रिव्यू योर चैनल केयरफुली एंड कंफर्म दैट इट वायलेट्स आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। वी नो दैट दिस इज प्रोबब्ली डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ बट इट्स आवर जॉब टू मेक श्योर YouTube इज अ सेफ प्लेस फॉर ऑल। वी वोंट बी पुटिंग योर चैनल बैक अप ऑन YouTube। उनका चैनल अभी वापस नहीं आने वाला। तो एक ट्वीट किया दुर्गा माता के अगेंस्ट में लोग कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस अभी भी है YouTube जो हिंदू गॉड्स को एब्यूज करते हैं, वो सारे वीडियोस वायरल होते हैं YouTube पर। तुमने मुझे बैन किया फॉर एक्सपोजिंग थग्स एंड रिवीलिंग ट्रुथ। और बताओ भाई क्या हाल चाल? वो बताया मेरा किसी प्लेटफॉर्म है वहां पे वो बैंड है, पता नहीं कब तक मैं ट्विटर पर भी हूं। अंडरस्टैंड हाउ पीस्ड ऑफ सोरोस क्लिकर्स मस्ट बी दैट द बैंड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। दिस इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। बट आवर पार्टी नॉट ओनिंग इट इज डिसअपॉइंटिंग। नो बीजेपी को टैग किया, इट विल टेक सम टाइम टू कम बैक बट व्हेन आई कम बैक आई विल ऐड टन्स ऑफ वैल्यू टू व्हाट इट मींस। इफ स्ट्रिंग विनोद डिक्लेयर्स अपॉन समथिंग फॉलोअर्स डोंट वरी, यू विल गेट अ गुड न्यूज़ सून। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। जब भी मैक के बारे में। जब भी मैक फिल्म आपको पता होगा जो 2007 में रिलीज हुआ था, क्या उसका सीक्वल बनेगा मतलब कि पार्ट 2। उसके बाद में इम्तियाज अली जो कि डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उन्होंने कहा हाँ भाई अनुज जब भी मैक 2 है। मैंने जब भी मैक 2 से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह देखे, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं पब्लिश करने से। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है जब भी मैक पार्ट 2 बनेगा करके। जब बनेगा तब बता दूंगा। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। सलमान खान के बारे में। सलमान खान का इंडस्ट्री में हो गया 35 इयर्स। उसके ऊपर रिएक्ट करते उन्होंने कहा मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा 35 इयर्स हो गया इंडस्ट्री में। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया, लव, सो मच। मैंने अपना जर्नी का हर मिनट एंजॉय किया। और जो सलमान खान का डांस वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बेसिकली वो एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रैंडसन के बर्थडे पार्टी में डांस किया था न्यू दिल्ली में। तो उसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जो उनके फैंस है वो कंसर्न है अबाउट हिज हेल्थ। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ही लुक्स अनफिट ना, अनफिट दिख रहा है करके बहुत सारे लोग कहते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। वेप्स एंड ई-सिगरेट्स के बारे में। आपको पता होगा इसका ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है इंडिया में। उससे रिलेटेड यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई कर दिया कि जिसके पास भी वेप या फिर ई-सिगरेट होगा इंडिया में इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो वेप्स या फिर ई-सिगरेट्स होते हैं हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। लोग अभी वेप्स या फिर ई-सिगरेट लेते हैं, बाद में जाके वो जो सिगरेट्स वगैरह लेने लगते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के बारे में। फाइनली आफ्टर 32 इयर्स अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का हमें एक साथ एक फिल्म देखने को मिलेगा। जैसे कौन सी फिल्म दिखेंगे? थलाई। और बताओ रजनीकांत ने लास्ट काम किया था हम मूवी के लिए 1991 एंड अभी अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का एक फिल्म आ रहा है थलाई 170। ये तमिल फिल्म है। ये अमिताभ बच्चन का फर्स्ट तमिल फिल्म ऑफ कोर्स हिंदी में इसको डब किया जाएगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर के बारे में। आपको पता है ओ माय गॉड 2 को जो ए सर्टिफिकेट मिला था सेंसर बोर्ड की तरफ से। ए सर्टिफिकेट यानी 18+ फिल्म को देख सकेंगे। उसके बारे में डायरेक्टर ने कहा फिल्म के उसी वर्जन जिसको सेंसर बोर्ड ने पास किया उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। पता नहीं क्या चीज का डर है। मैं किसी फिल्म के अगेंस्ट नहीं हूं, क्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बहुत सारे सीन्स नहीं थे? क्या वो फिल्म ओके था बच्चों को देखने के लिए? ये बताएं क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। रामायण मूवी के बारे में। रामायण मूवी का शूट चालू हो जाएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 विद रणबीर कपूर, साई पल्लवी एंड एक्टर यस। रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी पहले से स्टार्ट कर देंगे रामायण का शूट एंड यस ज्वाइन करेंगे जुलाई में फॉर हिज एक्सटेंडेड अपीयरेंस इन पार्ट 1 ऑफ द ट्रायलॉजी। फाइनली भाई रामायण मूवी बनने
वाला है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें। हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, लिखा गया फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू हैव मोस्ट वीडियोस विद मोर देन 100 मिलियन व्यूज। फिर एक और है फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू हैव मोस्ट व्यूड ट्रेलर इन द वर्ल्ड इन 24 आवर्स। ऑफ कोर्स ये बात तो आप भी एग्री करोगे, हनी सिंह एकमात्र ऐसा आर्टिस्ट है जिसके गानों में सबसे ज्यादा 100 मिलियन व्यूज है। एंड अपनी म्यूजिक वीडियो का लास्ट आर्टिस्ट ट्रेलर उसमें जो काफी रिकॉर्ड तोड़ 24 आवर्स में मोस्ट व्यूड म्यूजिक वीडियो का ट्रेलर बन गया है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें। गेमर फ्लिक के बारे में। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि गेमर फ्लिक का एक स्ट्रीम को जो YouTube ने टेक डाउन कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रीम में बस एक प्लास्टिक गन दिखाया था, असली गन भी नहीं था। इससे रिलेटेड वो एक ट्वीट किया था, ऑफ कोर्स उनका स्ट्रीम वापस नहीं आ रहा। तो वो कहे दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, आई वर्क अराउंड 6+ hours on every stream of mine, 80,000 plus of my audience watches the stream live, been streaming since 6 years on YouTube now and this is how I get treated. Stream taken down for showing a fake plastic gun and no help whatsoever. I was fooling around with a plastic gun, that too in a comedy way, which is normal on 1000 plus videos on YouTube, but my stream gets taken down sad. पता नहीं कभी YouTube का एल्गोरिथम समझ नहीं आता है, कभी YouTube का कस्टमर सपोर्ट मतलब इतना हेल्पफुल नहीं होता ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें। इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी सिंगर ग्राइम्स, उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया इलॉन मस्क के ऊपर ओवर पैरेंटल राइट्स ऑफ देयर 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखा गया सिंगर सबमिटेड अ पेटिशन टू एस्टैब्लिश पैरेंटल रिलेशनशिप इन कैलिफोर्निया कोर्ट। और रिक्वेस्ट किया गया कोर्ट को टू आइडेंटिफाई द लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड व्हेन दे आर नॉट मैरिड। बता दो इलॉन मस्क ने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्राइम्स की जो है 3 बच्चे हैं, ठीक है। पहला बेटा जो कि मई 2020 में पैदा हुआ था, इसके बाद दिसंबर 2021 में रिसेंटली पता चला कि उनका एक और बेटा है whom they call ताऊ। ग्राइम्स के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क जो है ग्राइम्स को अलाउ नहीं करेंगे टू विजिट वन ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कौन से चिल्ड्रन का बात हो रहा है, शायद से ताऊ का, जो लास्ट में पैदा हुआ था। उन्होंने कुछ पहले ट्वीट किया था, इलॉन टू लेट मी सी माय सन, प्लीज रिस्पोंड टू माय लॉयर। यस, ऐसे इलॉन मस्क उनके बेटे को देखने ही नहीं दे। बता दो इलॉन मस्क के टोटल कितने बच्चे पता है? वो है भाई 11 बच्चे। तो आज के अपडेट से वो तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। 11 बच्चे। वो कहते हैं ना किसी ए यार वो कहते हैं वो सब करो भयंकर। चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो आफ्टर 4 years of rejections, failures and consistent efforts, I finally made it. Since I completed my college, so very good morning everyone. Today is the day. जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था ever since I completed my college degree. The 4 years of hard work जो मैंने किया ना, for the day I wanted to see, वो आज है. So excited. I used to live close to Microsoft office, जहाँ पे आप मेरे लैंडमार्क को मिले थे, but I never got to see it. But now today is the day. And for lunch आज मैं लेके जा रहा हूँ a roast con pollo. So this is something Katie made. Thank you, Katie. Yeah, you're welcome. Are you excited? Yes, very excited. You feel ready to go? Yes. ये भयंकर ही कैसी आंख है बे। Okay. Have you heard the expression first impression is the last impression? No, but I mean, I think it's a really cool expression. I think that there's a lot of truth to it. I grew up hearing an expression that's not as powerful. I think you only get one chance to make a first impression, or like you only have one first impression, or something like that. But I like that better. That's like a lot more dramatic. Yeah. Yeah. Awesome. Now cycle पे रोज ऑफिस जाना is very very challenging because it's around 3 to 4 miles. That is around 6 to 7 kilometers away from my house. तो बहुत ज़्यादा sweaty हो जाऊंगा if I go by my bike. So I'm waiting to get my e-bike ताकि मैं साइकिल में भी जा पाऊँ। So that's parking for charging and that's green vehicle. क्योंकि आज गाड़ी चार्ज है 73% charge already. So I'll just go for green vehicle parking. And this office was opened in May, so I'm one of the first few thousand employees to see it. And these all drinks are for free, so I'm gonna have my orange juice. So cafeteria is really nice for special. एक सेकंड क्या लिखा है वो? So cafeteria is really nice for special food that Tuesday, Wednesday, and Thursday. And for lunch today we are at the rooftop, or you can call it terrace. Oh, you didn't start. Thank you. You're moving this. So finally, this is my desk. To be very desk, this was not actually desk. I have to set up my desktop with the display board or display to Type-C board. So the things I need to give us to monitor. And I also have to set up my laptop. And this location is surrounded by amazing restaurants. So I have picked up food for Katie. So finally, time to do some unboxing. And as you all know, I'm a mobile app developer. Android and iOS developer. So Android as well as iPad stuff, दोनों चीजें साथ में मिल रही हैं. So सबसे पहले we will be unboxing
Android because I am Android developer mainly. So Pixel 6 जो कि brand new मिला है, that will be used for testing some Android apps. And इसके बाद है iPad. So this will be used to deploy या फिर build some iOS apps, which I'm very excited for. So ये है iPad 8th generation, ये भी बिल्कुल brand new है. So and then this is actually iPad 9th generation. Sorry, 9th generation. Generation का पता नहीं चलता. So iPad 9th generation. And then next our laptop. So this is Lenovo Yoga laptop, which is very cool. मैं सारे features explore कर रहा था आज. So let me show you all. So सबसे पहले it is Windows 11 powered Yoga laptop. It is so cool because it's called Yoga. So इसका मतलब ये है it can actually bend down to here, also to here to become a tablet. So basically in my meetings I can draw as well. So आप सोचोगे I will be drawing with my hand. No, I'll be drawing with a pen. So basically on this side there's a pen which comes out as well. So with this pen has two buttons, one to write and one to erase. So I think one to erase, one to write. You can switch around. So let's unlock. So I need to use keyboard and for password. Okay. So unlock. Now I'm going to open OneNote app. This is one of the most used app here for notes. So let's create a new note. So honestly, it's an amazing experience coding and drawing on this laptop. Laptop is around 14 inch, so not that big and not too small because I have to carry so many things in my backpack. So ज़्यादा heavy नहीं होगा. अब आप सोचोगे how I will be building the iOS apps. उसके लिए we have Mac Mini right here. So Mac Mini, or I can also request for MacBook if needed. If I need in future to do more iOS, I can ask for it. But for temporarily, I can use Mac Mini and also the iPad to test and run some apps. So बहुत exciting होने वाला है. And मेरा backpack luckily it won't be really heavy this way. So this is I think only like 1 to 2 kgs. And oxygen में लेके नहीं जाऊँगा. Just I need to buy some cases for iPad ताकि scratch ना पड़े. I don't want to spoil Microsoft hardware. So just gonna make sure. But otherwise, I'm really excited. And this docking station is so amazing. With just one port, both the monitors get connected immediately. Almost immediately. Yes. Almost immediately. Yes. And by the way, meet some of my teammates. Hi, do you want to introduce? Yeah, my name is Hogi. I just started Microsoft. And Joseph. So, how difficult was it for you to make it to Microsoft? Honestly, it's the prep work that got into it. Uh-huh. That really made it tough. What, a year and a half of like leak coding, easy, medium, and hard questions, multiple rounds of interviews. I think after 4 tries, on my 5th one, I was finally able to land a job here at Microsoft. So wow. I would say it was pretty difficult, but I learned a lot. Awesome. I also had 4 rejections. And how about you? Yeah, I also had like a few rejections on the way, but like yeah, preparing for those and like even though like I got rejected for those, like yeah, like that definitely like those were like good practice and like I think without those rejections, like I wouldn't have made it here. Thank you so much. चलो शुरू करी जाए. कमाल का दिन था यार, बहुत मजा आया. Today got to experience the Xbox gaming room, all the hardware, and most importantly made some friends, talked to some colleagues. सात्विक रिवाइव नहीं कर सकते, ठीक है? कोई रिवाइव नहीं करो. वो खुद ही रिवाइव हो गया. ओके, खुद ही रिवाइव हो गया, ठीक है? तुम एक दूसरे को रिवाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है? अरे सात्विक, एक दूसरे को रिवाइव नहीं कर सकते. मत करो. मत करो 1 वर्सेस 1 है. मत कर. अरे आरएक्स मत कर. अरे भाई अरे भाई ले लिया इन लोगों ने गेम रे, ले लिया. रिवाइव नहीं कर सकता है कोई एक दूसरे को, ठीक है? इनको भी बोलते हैं मत करो एक दूसरे को रिवाइव. वो गेम से ही हट गया भाई. डीसी से हट गए क्या वो लोग? हाँ चलो लाइव पे देख लेंगे अगर देख. हाँ चलो ठीक है, लाइव पे देख लेंगे. अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो मैं बंदों को भी बोल दूं भाई रिवाइव करने के लिए, तो कैसे गंदी तरीके से रिवाइव देंगे? नहीं वो नहीं रिवाइव. चलो ठीक है, पहला राउंड निकाल लिया भाई इन चिमकांडियों ने. थंबनेल का है टाइम निकाल पाएंगे या नहीं पता यार. गाइस क्या लगता है? अच्छा मैच कोडिंग करूँ क्या बोलते हो? सत्विक भाई बहुत. गाइस सबके आईडी स्पैम, थोड़ा सा रुक जाओ. ये गेम होने के बाद में मैं करूंगा 6500 लाइक्स पे. जल्दी से 6500 क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई. जल्दी सब्सक्राइब करो. सारे बंदे नीचे जाके एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो. जो भी लोग देख रहे हो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो. सत्विक भाई ये सत्विक तो बहुत तगड़ा मार रहा है मेरे को उम्मीद नहीं. अरे ओए भाई सही मारा. अच्छा खेला. आरएक्स हक देगा. मैं बोल रहा हूँ ना, आरएक्स हक देगा. आरएक्स ब्रो चड्डी फाड़ दो, खुद की फाड़ देगा भाई. देखते सामने वाले बंदे. भाई गया आरएक्स गया. अरे मारो इसको. बच गया. अरे मारो. क्या कर रहे बंदे? मार क्यों नहीं रहे भाई इनको? अरे मारने ट्राई कर रहे लेकिन लग ही नहीं रहा उनका शॉट. अरे लग गया. एक नंबर. पीछे से आरएक्स गया. अब सात्विक 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 5. सात्विक 1 वर्सेस 5. अरे गया राउंड गया. गोली मारी भाई. गया राउंड गया. ओपी. चलो गया राउंड गया इनका. पहला राउंड तो जीते थे गाइस ये लोग. बताओ कोडिंग करूँ क्या? फिर एकदम हैवी कोडर हूँ मैं. Cause we're driving down a one-way road. Something better.
Yeah, something better. It life gets hard and it gets messed up and it gives so much, but it's not enough. And the highs too highs and the lows too low. And they let you go. Don't you let it kill you, even when it hurts like hell. Oh, whatever just you get. Don't let it break your heart. Time takes time to heal it. You can do it by yourself. Oh, whatever just you but don't let it break your heart. Don't let it break your. Don't let it break your. Don't let it break your heart. It comes, it goes. But driving down a one-way road. Something better. आ जाओ अब करेंगे कोडिंग हैवी हैवी वाली it comes it goes driving down a one-way road. Something better. Life gets hard and it gets messed up and you give somewhat, but it's not enough. When the highs too highs and the lows too. Love someone and they let you go. Don't you let it kill you, even when it feels like hell. Oh, whatever tears you apart. Don't let it break your heart. दो ही मिनट में आ रहे guys. Comes, it goes.
Let's go. Driving on the one-way road. It's life gets hard and it gets messed up when I give so much, but it's not. अरे यार नीता सान का ना 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 माये मारे माये मारे माये मारे नीता सान का वैसा नीता सान वैसा something like this. So we have this array, or let's take the integer one only. Let me create a new one. This one looks a little dirty, so I can say something like input. So we'll be like doing the input thing over here. Create a new one. This one looks a little dirty. The integer one only. Let me create a new one. This one looks a little dirty, so I can say something like input. So we'll be like doing the input thing over here. Public static void main. Okay, here you can see this is also a string array. So now you know args is actually a string array. Okay, so let's do something related to input. Let's say I'm saying integer array arr is equal to new integer of size 5. Okay, like doing the input thing over here. Public static void main. Okay, here you can see this is also a string array. So now you know args is actually a string array. Okay, so let's do something related to input. Let's say I'm saying integer array arr is equal to new integer of size 5. Okay, so it's starting from 0. If the index is starting from 0, we know that the last index value is going to be size minus 1, which is 5 minus 1, which is 4. So I can say arr of 0 is equal to 23, arr of 1 is equal to 45, and so on and so forth. So basically, if I just print arr of, I can say arr of, no, it's very time consuming, but anyway, 2, 3, and 4. Say 40, something like this, and something like this. If I print the array index number 3, it's basically going to print me, what is that index number 3? 543. It's printing me 543. Internally, it's now stored something like this. You know, something like this: 23, 45, 233, 543, and 3. Okay, very simple stuff. But if the array was like 1000, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 45, 223. size, and I wanted to fill this 1000 times. This will be very repetitive. Can't we do it like easily? We can use a for loop. So I can say something like input using for loops. So basically I'm going to say for every index I starting from 0 going till where? Going till the length of the array. Here I know that it's 5. I can put less than 5 over here because then it will go for index number 0, 1, 2, 3, 4. That's what I want to do. But many times you might not know the size of the array. So for example, you can do arr.length. So you can see length is an integer variable that is public. For in the array class, we'll learn more about this in object programming. You can see it's a length variable which represents the length of the array. So here I can just say arr of I is going to be equal to input. We can take an input. We can say scanner in is equal to new scanner system.in. So here I can say in dot next int. So whenever you take a next integer, it's going to be stored in the arr of I. Initially the value will be 0, then it will print, okay, arr of 0 is equal to take the input, then the value will be 1, arr of 1 is equal to take the input, then so on and so forth. Okay, that is pretty much about it. One object that is public. For in the array class, we'll learn more about this in object programming. You can see it's a length variable which represents the length of the array. So here I can just say arr of I is going to be equal to input. We can take an input, we can say scanner in is equal to new scanner system.in. So here I can say in dot. Okay. Let's see it. Scanner. System.in. Scanner SC equal new scanner system.in. arr I equals to
sc dot next int. Dot next int. So whenever you take a next integer, it's going to be stored in the AR of I. Initially the value will be 0, then it will Out. अरे ट्यूशन में कसा आता रे, ट्यूशन में कसा जाने का रे, सच्ची का रे मारा ना ये मारा जीरो में दे रहा हूँ 4 10 55 69 1 4 10 55 69 print. Okay, AR of 0 is equal to take the input, then the value will be 1. AR of 1 is equal to take the input. Input, then so on and so forth. Okay, that is pretty much about it. One more thing I want to share is that you can also print this in the same way, so you can run the same for loop. This time, instead of taking an input, you can just say print AR of I. Print AR of I. I can maybe print it in a single line. Let's try to run this. And it's asking for 5 elements because AR.length is 5. So it's going to ask for 5 elements like, let's say, 23, 3, 4, 6, 57. In the next line, it is going to run this for loop to print it. एक सेकंड, अगर मैं इसको वैसे करता हूँ 5 की मैं 6 वैल्यू डालता हूँ 10 20 30 55 क्योंकि 5 ही कर रहा है। ठीक है, ठीक। So it ran this for loop, took the input, then it ran this for loop, and every time it just printed it out. That's it. This is showing some highlight. This is called a for each loop. So basically, another point for you all. You can definitely just iterate over, like go through these indices, because here you're just using the index to get the item. You can directly get the item as well using an enhanced for loop. Replace with enhanced for. Let's try that out. Okay, so basically this is the syntax for that. For data type reference variable in array,
print that. Right. So basically here, ट्यूशन में कैसा अंतर तर नर 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 I'll write it as a comment as well. Here num represents element of the array. So element number 1, element number 2, element number 3, 4. For every element in the array, print the element. For every element in array, print the element. That is what we're doing here. If I hide this is known as for each loop. Okay, if I type 5 numbers here, okay. Obviously, if you try to get the answer to more than 5 numbers, that will give you an array, an error. So basically, if you're saying print ARR of, let's say the last index is what? 0, 1, 2, 3, 4. So if you try to print ARR of 5, this will give you error. It's saying index out of bound. Index out of bound. The last index is index number 4 because the size is specified as 5. How are you printing size index 5? Index 5 does not exist. Error. So index out of bound error. Same thing if you write some negatives or whatever. Okay, cool. One more very nice way in order to print. So I showed you 2 ways to print. One easy way to print is actually do something like this. Print there's an arrays class dot toString and then you just pass the array over here. Array class has a toString method. When you give an array into it, it basically converts it into a string and prints that string. So you can see it's taking an integer array over here. And if the length is if the length is like if the integer array is empty, it's returning empty braces. If it's null, it's returning null. Otherwise, it's using string builder. String builder is something we'll talk more about in the later sections. And you're just adding comma and everything, formatting it for us. And using a simple for loop, same thing that we were doing. Okay, if I try to run this, it will just without any for loop. Internally, it's using for loop only. You can see internally it's using for loop only. Nothing new over here. Okay, I just write 5 numbers here like 1, 2, 3, 4, 5. It's printing. It's adding the brackets, adding comma and everything for us. That is true. Adding the brackets, adding the comma, adding the numbers and whatever. Okay, 3 ways to print and this is the best one. This is very nice. It's gonna be okay, everyone. It's bad. Alrighty, cool. Now, if you want to learn more about, let's say we talk more about, let's say we take a string array. Okay, we take a string array. We take an array of objects. This was like array of primitives. Okay, this is an array of primitives. Now we do array of objects. We already did this, let's say string
str is equal to something like new string name. Sorry, not name. What am I doing? Let's say 4 size. Okay, and then I can say for I0 I less than str dot length I plus plus. I can just say is equal to in dot next. That's it. Then I can just print it. Arrays dot toString arr. Sorry, not arr, str. Okay, let me just hide this thing. Initially, when I do this thing, here the declaration has happened. Here the initialization means the dynamic memory allocation. Actually, the thing has been created in the heap, and by default, it's going to contain 4 objects in it because the size is 4. And by default, it's basically actually containing the reference variables to the objects. And those objects can be stored anywhere in the heap. I'll draw a diagram of this soon. 1 second. When I run this, let's say you're gonna be okay. Never need to write it. Remember you told me you're not alone. Pick up the phone on me. Remember you're feeling lonely. Remember you told me you're not alone. RST. Yeah, I'm gonna take my host. Old Town Road. Ride till I can no more. Take my host. Old Town Road, I'm gonna ride till I can no more. Horses in the back, horses like that. Daddy Mary Black, I'm who's you gonna say? Driving on it now. ऐसे डॉट नेक्स्ट ही रहने देते हैं ठीक pick up the phone out array dot list ut array dot to array dot to string. It's gonna be okay. Everyone needs a bad day. Remember you told me. Yo, hi. बोलो क्या say I just input 4 strings like ABCD, A, B, C, and D. It's going to print ABCD. you're not alone. Pick up the phone. Yo, hi बोलो क्या Yo, hi बोलो क्या Don't think that this is a character. This is a string. Okay, this can be a string as well. You want to do A, B, B, C, C, D, D. Internally, how it's being stored, let's look into it. So here you can see on the internally how it's being stored. but it's like it can store only a word. Let's look into it. So here you can see on the diagram.
चलो अपन वीडियो बनाते हैं, देन उसके बाद अपन ये सब देखेंगे। क्या नाम है, नूब गेमर। एक सेकंड, कॉल मी व्हेनेवर यू फीलिंग फाइनली ये call me whenever you feeling lonely, remember you told me। ऑडियो माइक सब ठीक है। सो गाइस फाइनली स्पॉयलर्स आ चुके हैं, अभी आओ फटाफट से अपन देखते हैं। तला भाई को भी सब्सक्राइब कर देना। ये फाइट किसने ज्वाइन कर लिया भाई? यूजी इतादोरी। हु इज हियर? इटाडोरी यूजी। या फाइनल चैप्टर 238 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। ऐसे बहुत सारे चीजें कुछ ना कुछ इस वाले चैप्टर के अंदर जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं है, जो इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स देखने के बाद पता चल रहा है। और यहाँ पर क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, लास्ट जो 3-4 चैप्टर्स है जुत्सु काइसेन के सारे चैप्टर्स ट्रेंडिंग पर है। मतलब एवरी सिंगल चैप्टर जो आ रहा है सारे के सारे ट्रेंड पे जा रहा है। साला मेरे को मार दिया, ट्रेंड पे तो जाएगा ही। ओके गे कुछ करिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग। आई होप तुम लोग याद है, चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा सुकुना वर्सेस काशिमो, और लास्ट में जाके यार सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जो उसका हियन वाला फॉर्म है उस वाले फॉर्म में आ जाता है। और तभी मैं तुम लोगों को बताया था कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है, सुकुना ट्रू फॉर्म वर्सेस अगर काशिमो फाइट करेगा तो हु इज गोना विन? एंड एवरीवन वाज लाइक यू नो अबे यार सुकुना जीतने वाला, इजी फाइट है यार। हाँ चलो, राइटर ने तुम्हारी बात सुन ली और ये एक्सपेक्टेड भी था। इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये भी पता चलता है कि सुकुना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। चलो इस वाले वीडियो के अंदर A to Z सारे लीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट द लेटेस्ट चैप्टर। और शुरू करने से पहले बता दो इस वाले चैनल पर नया हो तो यार मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो। हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है 6,50,000 सब्सक्राइबर्स के, तो मेक श्योर तुम लोग करो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। चैप्टर की स्टडी काशिमो एक अलग ही फॉर्म में चला है, उसकी 3 आंखें दिख रही है भाई हम लोगों को। अब सुकुना वहां पर अपने हियन के फॉर्म में है, तो यार काशिमो को भी अलग ही फॉर्म में जाना पड़ेगा। दोनों अपने ट्रू फॉर्म में होंगे तभी तो यार फेयर फाइट होगी। बट ये पर काशिमो अपने ट्रू फॉर्म में जाने के बाद अपने थर्ड आई से देखते सुकुना को, पता है उसको क्या दिखता है? एक चीज मैं करेक्ट करूंगा तला भाई को, दैट इज नॉट उसका ट्रू फॉर्म, बट उसके कर्स एनर्जी या कर्स स्पिरिट का अंदर दिखा परफेक्शन। जो सुकुना कैरेक्टर है, जो उसके एकदम न्यू लुक है, जो उसका न्यू फॉर्म है, वो कुछ और नहीं है, ये बस एकदम फुल परफेक्शन है। और तब उसको घोषित कर दिया सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी फिलहाल हमारी स्टोरी के अंदर सुकुना से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब कोई ना कोई पक्का कमेंट करेगा गोजो आके सुकुना को पेल देगा, गोजो वापस आ रहा है, गोजो इज कमिंग बैक। भाई देखो आई नो इट हर्ट्स, दिल टूटता है, नहीं आएगा, बट हमको ओवरकम करना चाहिए राइट। तो मैं बोलूंगा वहां से निकल जाओ, बिकॉज़ जो यहाँ पर राइटर रह गए वही फोकस नहीं कर रहा। 2 चैप्टर निकल चुका है, नहीं दिखा रहा है, तो तुमको भी वहां से निकलना चाहिए। तो वहां पर काशिमो को सुकुना के साथ-साथ एक परफेक्शन दिख रहा था। फिर इस वाले में हम लोग नेक्स्ट वाले पैनल पर देखते सुकुना को फुल एक ट्रू अलग ही फॉर्म है, जिसके पास 4 अलग-अलग हाथ है, 2 डिफरेंट फेसेस, और उसके पेट पर भी एक अलग ही फेस है भाई। और इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था, बट ये देख के मैं थोड़ा बहुत यार शॉक हो गया। तो यहाँ पर सुकुना का ट्रू फॉर्म के बारे में हम लोग जितना सोच रहे थे उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला है। इस वाले चैप्टर की उस मुंह से खाना खाएगा, इधर से डकार मारेगा। हम लोगों को जो सुकुना का ट्रू फॉर्म देखने को मिलता है ना, वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका जो फॉर्म है वो एक्सप्लेन भी करता है। यहाँ पर नरेटर कौन बोलता है सुकुना जो है वो अपने 2 हाथों को हैंडसिल बना के रखा है, उसके साथ साथ उसके जो अलग 2 हाथ है वो बिल्कुल खाली है। हैविंग ट्वाइस द आर्म्स एंड माउथ ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज एन एडवांटेज ग्रेटर देन नो अदर फॉर अ सोर्सरर। मतलब यहाँ पर सुकुना का ट्रू फॉर्म दिखा के हमारे नरेटर कौन बोलने की कोशिश कर रहा है सुकुना जो है वो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे ज्यादा ऊपर है। और अगर एक सोर्सर के पास 4 अलग-अलग हाथ, उसके साथ साथ 2 डिफरेंट माउथ्स एंड अलग-अलग आंखें हो, तो एक सोर्सर को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलता है, जो किसी और सोर्सर को मिलता ही नहीं है। तो हमारा जो सुकुना है वो सबसे ज्यादा सुपेरियर है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अगल बगल में कोई कुछ नहीं है। बात तो सही है भाई। सुकुना इज प्योर एविल, सुकुना इज the strongest of all time, सुकुना is greatest of all time, सुकुना is a ये सब सुनने में बहुत बुरा तो लगता है, I know नहीं, मैं गोजो फैन नहीं हूं। अगर राइटर सुकुना कहते strongest, I'm happy, we can't do anything about it। वो हियन जैसे सबको पेलमपाल करते हुए आ रहा है भाई। अब यहाँ पर गिगे ने एकदम सुकुना को ब्रोकन घोषित कर दिया। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि सुकुना को एक्चुअली में हराएंगे कैसे लोग। अब ये अलग बात है कि सुकुना को लास्ट में नर्फ कर सकते हैं राइटर अगर चाहे तो, जिससे थोड़ा बहुत फैंस गुस्सा तो हो जाएंगे, जस्टिस भी नहीं होगा, बट एविल कैरेक्टर लास्ट में हारते हैं तुम लोगों को पता है। बट आई वांट अ गुड रीजन भाई, नहीं तो भाई मैं चाहूंगा कि गोजो मैं भाड़ में जाए, गोजो मतलब जो भी है छोड़ो, मतलब सुकुना जीते। आई वॉन्ट कि सुकुना लीव करे। सुकुना एट द एंड ही बोलता है कि भाई मेरे को अपनी जिंदगी में मैं खुश हूँ,
तुम आके मेरे को परेशान मत करो, अगर तुम मेरे को छेड़ोगा मैं तुमको पेल के रख दूंगा। बहुत ज्यादा बेकार प्लॉट निकलेगा, मैं बता रहा। फिर हमारा नरेटर सुकुना की न्यू फॉर्म की बहुत ही ज्यादा जम के तारीफ करता है। उसके बाद हम लोगों को पता चला सुकुना पास्ट में बहुत सारे लोगों को हरा के आया भाई। जो 5 वाइट जनरल्स हैं उन लोगों को हराया सुकुना ने पास्ट में। जो सन है, जो मून है, जो स्टार स्क्वाड है, नॉर्थ फुजिवारा क्लैन के, वो सारे लोगों को सुकुना ने अकेले डिफीट किया ब्रो। दिस इज नो जोक। उस वाले टाइम में फुजिवारा क्लैन सबसे ज्यादा टॉप में थे। आई एम टॉकिंग अबाउट हियनिरा के टाइम में फुजिवारा जो क्लैन है सबसे ज्यादा वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर जो है उस वाले टाइम में थे। एंड गेस व्हाट, सुकुना ने सब लोगों को अकेले डिफीट किया ब्रो। जो इस वाले चैप्टर के स्पॉइलर में हम लोग को पता चलता है। और बस एक बार फुजिवारा क्लैन के बंदे ही नहीं भाई, सुकुना क्लैन के जो डिसीजन स्क्वाड है उनको भी भगा दिया। नॉट ओनली दैट, जो एंजल्स है फ्रॉम आबे क्लैन उनके बंदों को भी भगा दिया सुकुना ने। यहाँ पर कितना हुआ, फुजिवारा क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, फिर आबे क्लैन के जो एंजल्स है सारे के सारे लोगों को अकेले सुकुना ने डिफीट किया। नो वंडर उसको लोग बुलाता है किंग ऑफ कर्सेस, सुकुना द गॉड। इसके बाद हम लोग स्पॉइलर में देखते हैं अभी एक साथ में बोले द गॉड। वाह भाई, ब्यूटीफुल। काशिमा सुकुना को ब्यूटीफुल बोल के अटैक तो करता है, बट यार सुकुना ने एकदम आराम से उसको पंच मार के दूर गिरा दिया। फिर सुकुना काशिमा के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है। अटैक करने से पहले वो पता है कौन सा अटैक है, डायमेंशन स्लैश के बोलता है, या बोल सकते हैं हम लोग काशिमा को वार्निंग देता है उस अटैक को डॉज करने के लिए। नहीं मतलब तुम समझने की कोशिश करो, सुकुना अटैक कर रहा है, अटैक करने से पहले चिल्ला के बोलता है काशिमा को, ओ काशिमा भाई इसको थोड़ा डॉज कर ले, अटैक भी तू ही कर ले, वार्निंग भी तू ही दे दे। हीरो विलेन दोनों का रोल प्ले कर रहा है बंदा। अच्छा यार बस गोजो फैंस को रुलाया। आई एम हैप्पी। फिर हम लोग फाइनली देखते हैं सुकुना सेम वही अटैक यूज करता है जो उसने गोजो को मारने के लिए यूज किया था। और काशिमा ये अटैक देखने के बाद बोलता है ये अटैक दुनिया को भी काट सकता है। इतना पावरफुल अटैक था, ये अटैक पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो देखा। हम लोगों ने देखा सुकुना आगे बात करता है अबाउट ए स्टूपिड पर्सन हु वांटेड टू टीच हिम लव। अब गेस कर लो किसकी बात कर रहा है सुकुना। हां, यूरुजो की बात कर रहा है। स्टूपिड बना दे उसको। एंड यूरुजो हम लोगों ने देखा यार सुकुना को प्यार व्यार के बारे में सिखाने वाली थी बहुत कुछ, बट सुकुना ने तो यार एकदम से डिनाई। सुकुना एक चीज बोलता है, अगर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं तो ही लोग मुझसे प्यार करेंगे कर दिया। और गोजो ने भी कुछ सिमिलर बोल के रखा है सुकुना के बारे में कि सुकुना बहुत ज्यादा अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है, ही नीड्स लव और इस टाइप का कुछ बोला था गोजो ने। और somehow मेरे को भी लगता है सुकुना बहुत ही ज्यादा अकेला है। ये अलग बात है कि यार सुकुना का जो ट्रू फॉर्म है उसके अंदर दो अलग अलग लोग हैं। मतलब सुकुना का जो भाई है वो भी मर्ज्ड है इन माय ओपिनियन। और सुकुना की बैक स्टोरी की झलक हम लोग को लास्ट वाले चैप्टर के अंदर मिल चुका है। सुकुना ने वहां पर बोला कि ही वाज एन अनवांटेड चाइल्ड, वो बचपन से अकेला था। दैट मींस तुमको समझ में आ रहा है, ही मिस्ड आउट सो मेनी थिंग्स। पेरेंट्स से प्यार, एक डिफरेंट लाइफ उसने लीड किया, उसने एक दुनिया की अलग डार्क साइड देख के रखा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दुनिया में जो क्रूरल्टी है, जो वीक पीपल उनको कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, उससे सब बहुत क्लोजली देखा है बचपन से। बिकॉज़ ही वाज एन अनवांटेड चाइल्ड, राइट, जो सुकुना ने खुद ही बोल के रखा। सो दैट्स द रीजन यूरुजो वांटेड टू टीच हिम लव, बट वो विलन है। विलन को हम लोग लव के बारे में सिखा नहीं सकते। कैसा होगा अगर मर्डर को जाके तुम बोल दो भाई मरने से पहले सेक्स कर लेता, नहीं ना यार समझो। फिर इसके बाद आगे हम लोग स्पॉइलर में देखा भाई सुकुना ने एकदम से काशिमा को धो डाला, बहुत ही आसानी से एकदम धो के एकदम खत्म कर दिया भाई। फिर इसके बाद आगे स्पॉइलर में हम लोगों ने देखा सुकुना सेंड्स अ नेट ऑफ डिसमेंटल स्लैशेस अपॉन काशिमा। बहुत सारे यार, इससे बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब पता नहीं इसको सर्वाइव कैसे करने वाला है काशिमा। बट उसके बाद ही हम लोगों को काशिमा के फ्लैशबैक देखने को मिलता है जो एक्चुअली पूरी जापानीज में है। मेरे को जापानीज समझ में तो आती है बट रीड करना नहीं आता। आई डोंट नो, इसकी ट्रांसलेशन अभी तक मेरे पास नहीं आई। तो पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोगों को पता चलने वाले फ्लैशबैक किस चीज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम लोग दो गॉड्स को एक साथ देखते हैं, सुकुना एंड काशिमा को। वहां पर कुछ फ्लैशबैक के मोमेंट्स भी दिखाई दिए एंड कुछ बातचीत भी हो रही थी दोनों के बीच में। अब जब 1v1 बैटल के बीच में ना फ्लैशबैक आता है किसी कैरेक्टर के, हम लोग को पता चल जाता है कि उस कैरेक्टर के पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, ऊपर वाला उसको बुला रहा है। तो यहाँ से कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे काशिमा के लिए दी एंड है, काशिमा का टाइम खत्म है, वो भी मरने वाला है। बिकॉज़ सुकुना ने फाइनली अपना लास्ट वाला जो फाइनल मूव है वो करने वाला है। इसके साथ हम लोगों ने फाइनली देखा हाकारी ने उरामे की जो सुकुना भी लाइक अल्लाह अल्लाह कितना तगड़ा लाओगे बे। मेरा डायमेंशन स्लैश काफी है यार, किसी के औकात नहीं यार उससे लड़ने की। आइस बैरियर है वो तोड़ दिया और एकदम से बाहर आ गया। हाकारी को देख के लग रही है फाइट उसने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, बट हमारे सामने रिजल्ट क्लियर है कि हाकारी ऑलमोस्ट जीतने वाला है। और हाकारी कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है ये मांगा रीडर्स को पता है यार। उसका जैकपॉट लगता है तो अपोनेंट खत्म है। और ये सारी चीजों के बाद लास्ट वाले पैनल का जो स्पॉइलर हम लोग को मिला, जहां पर हम लोग देखते हैं इटाडोरी एंड हिगुरुमा को एक साथ एंट्री लेते हुए एकदम सुकुना के सामने। और सुकुना बोलता है तुम लोग मेरा क्या उखाड़ोगे। अभी जो कैरेक्टर हिगुरुमा पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और यहाँ पर इसकी एंट्री यार ठीक है, बिकॉज ये जजमेंट करता है कि सामने वाला जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ में कौन सा सीन किया है नहीं किया। तब इस वाले कैरेक्टर की एंट्री का एकदम परफेक्ट टाइमिंग है भाई, सुकुना को जज करने वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर में। अब यहाँ पर ऑन दी अदर साइड तो यूजी एकदम एरन येगर बन गया, अपने आप को बाइट कर रहा है, टाइटन फॉर्म ना ले ले। ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट कुछ ना कुछ नया पावर तो होगा ही भाई। आई थिंक सुकुना के साथ सबसे ज्यादा मर्ज वही रहा है और उस पर कंट्रोल मारा है। सो मे बी सुकुना की पावर हो। नहीं तो हमारे यूजी टटरी जैसा है वैसे एकदम 1000 साल तक वो ट्राई करता रहेगा, कभी यार हमारे सुकुना को डिफीट कर ही नहीं पाएगा। तो फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर ने एंट्री ले ली फाइट के ना, दैट मींस समथिंग गोना हैपन। एंड गेस व्हाट, अगले वीक ब्रेक है, तुम लोग कुछ नहीं देखने वाले हो। तो गेगे बहुत ही अच्छे से यार कुक करने वाला है बहुत कुछ, और अगले चैप्टर में कुछ बॉम्ब गिराने वाला है। अब यहाँ पर मेरे को पता है हमें से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यूटा एंट्री लेने वाला है, बट यूटा नहीं है, वो है ही नहीं, वो कहा गया। अब सवाल आता है यूटा का पावर हम लोगों को पता है, क्या पता यूटा गोजो को रिवाइव कर रहा हूँ, वो हील वील कर सकता है। इसका मतलब क्या वो गोजो को हील करने चला गया, या फिर वो केंजो के पीछे गया जिसको अभी तक दिखाई नहीं फाइट शुरू होने के बाद से। और शुरू में हम लोगों को पता यार यूटा ने बोल के रखा था कि गोजो को दोबारा केंजो को मारने नहीं देगा, बिकॉज गोजो का जो बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी बॉडी लेके रखा, तो गोजो को वो अच्छा नहीं लगता है। अंदर ही अंदर गोजो को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, तो यूटा नहीं चाहता कि वो गोजो को करना पड़े दोबारा। तो ऐसा भी हो सकता है जो यूटा है वो केंजो के पीछे गया, या फिर फाइनली हम लोग की बात सुन के गोजो को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, हील वील करा के समथिंग। बिकॉज सुकुना को भी बीट कौन कर सकता है यार, बताओ कैसे करेगा। अगले चैप्टर के अंदर यूजी यार सुकुना को बीट कर लेगा तो एकदम पूरा एकदम फक्ता हो जाएगा।
मांगा, स्टोरी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतना बढ़िया कैरेक्टर फुल फॉर्म में है, यूजी हरा देगा बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना कोई ट्रेनिंग के, फिर तो मजाक बन जाएगा। सबसे एकदम हेटेड मांगा हो जाएगा ये, विलेन को एकदम नर्फ से भी नर्फ बना के रखेगा ये। तो कुछ ना कुछ अलग चीज दिखाना चाहिए राइटर को, जिससे थोड़ा लॉजिक बने सुकुना के हारने के पीछे। कहीं ना कहीं मेरे को क्या लग रहा है, यूजी ना उसको सप्रेस कर देगा। जैसे ही सुकुना को टच करेगा, सुकुना के कोई भी अटैक्स यूजी पे काम नहीं करेंगे। एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस इज गोना हैपन। रीजन नहीं तो यार कुछ सेंस नहीं बनेगा। और सुकुना ने तो अभी स्टार्ट किया फाइटिंग यार, अच्छे से हम लोग बहुत कुछ देखा ही नहीं, उसका ट्रू फॉर्म का एबिलिटी है वो ही नहीं देखा। उसकी बॉडी एडजस्ट हो चुकी सुकुना के फिंगर्स के हिसाब से, एंड सबसे ज्यादा फिंगर्स खाई है उसी ने इतादोरी ने, दैट इज ऑलमोस्ट 15-16। एंड जब उसने 18th फिंगर खिलाई और 20th फिंगर जो है अभी भी गोजो ने कहीं छुपा के रखी है। सो 19 फिंगर जैसे ही खाया वो निकल के आखिरी फिंगर उसने मेगुमी को खिलाया, जिसमें यानी कायदे देखे तो टोटल 18 फिंगर इतादोरी ने खाया। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा टाइम है उसके लिए, चिल करो, आगे वीडियो आती रहेगी, डोंट वरी, फुल चैप्टर आने दो। बाकी एक एक चीज देख देख के अच्छे से वीडियो बना दूंगा। हाँ, ये वाली वीडियो देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो। 6,50,000 आज की वीडियो के बाद कंप्लीट करना है, मिशन है ये तुम लोगों का। चलो आज वाली वीडियो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली ये नारुतो just pick up
like this. So we have this array, or let's take the integer one only. Let me create a new one. This one looks a little dirty. So I can say something like input. So we'll be like doing the input thing. Very simple stuff. But if the array was like 1000 size and I wanted to fill this one, so forth. Another point for you all. You can definitely just iterate over, like go through these indices. One more very nice way in order to print. So I showed you two ways to print. One easy way to print is actually do something like this. Print, there's an arrays class dot toString, and then you just pass the array over here. Array class has a toString method. When you give an array into it, it basically converts it into a string and prints that string. So you can see, now we do array of objects. We already did this. Let's say string str is equal to something like new string, this thing. Here the thing has been created in the side. Now put 4 strings like ABCD. You want to do A, B, B, C, C, D, D. You can see on the diagram, that is what is happening internally also. Basically you have your, you have your stack memory and you have your heap memory. So in the stack memory you have something like str in the stack memory, which is like a pointing in the heap memory. Heap memory actually contains a array of size 4. It's going to have 4 reference variables. Okay, some reference variables over here. There's some object AA over here, some object DB over here, some object CC over here, some object DD over here. This is pointing to this, this is pointing to this, this is pointing to this one, this is pointing to this one. It's showing reference variables to these objects can be anywhere in the heap. I hope that it is clear and it is very simple stuff, nothing new over here. And we have already done this many times. Already done object, heap memory and all these things we have done so many times. Okay, cool. Now let's talk about multi-dimensional arrays like 2D arrays, how 2D arrays work, how 2D arrays are stored and stuff. So we already talked about the input, we already talked about the output in 3 ways, and you can definitely modify it as well. So if I say, even though it's A, B, B, C, D, so you can say modify. So I can say, let's say the first index 18 will come here, or the 0 and the last index basically, let's say 4. 18 will come here, 1 will go at the last. What is it? Nothing. We already talked about this over here, passing in functions. Same thing is happening over here. Basically you have your star that you see. This is covered every, like the basic stuff, and then you can objects. Now that is stored internally. We talked about arrays.toString and how you can modify. One more thing I want to share is like the function example. Now one more thing, we are talking about references, objects and all these things for so many like arrays, how 2D arrays work, how 2D arrays are stored and stuff. So we already talked about the input, we already talked about the output in 3 ways, and you can definitely modify it as well. So if I say, even though it's A, B, B, C, D, so you can say modify. So I can say, let's say the first index should be something like Kunal. Then I print this again, so it will be changed to Kunal. So directly accessing the element and changing it. Okay, so you can definitely do that as well. This is actually directly getting the reference, saying this is the reference variable. That thing, this thing, this A, this thing, where that we have over here. Okay, this A, this first star that you see, this is actually str of 0. This is str of 1. Next one is str of 2. Last one is str of 3. So basically, you're getting that reference variable directly over here and changing its value. Hence the original one will be changed. Very simple stuff. We have done something before also. Okay, if you initially just write A, B, B, C, C, and DD, afterwards you can see string 1 is changed to Kunal's original string object is changed. That is true. You're changing the original object. That's what you're doing. So you're doing something like this. You're saying change this to Kunal. That's what you're doing. Okay, cool.
Some nights I don't even mean. Same old insecurity. Something. No, 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 no. I'll be there. It's gonna be okay. Everyone needs a bed. Let me see if I missed anything or not. So I believe we covered every the basic stuff over here. And with 2D arrays, I'll explain it to you shortly. I already mentioned and stressed on a lot of points multiple times. We talked about how this is working internally. We talked about how you can input it like this and how you can input it by for loop. We talked about memory management. We talked about heap, and we talked about primitive array. We talked about the other type array like the array of objects. Now that is stored internally. We talked about arrays for toString and how you can modify. One more thing I want to share is function example. Now one more thing, we are talking about references, objects, and all these things for so many lectures now. Let's try to see how these things behave in. Hey, can I do this? Let's try. Space. Yo. I run the run this again. And I'll be there. Na, 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 na. It's Functions. In the previous lecture, we learned about functions, and we also learned how data types and reference variables are passed into functions. In Java, there's only call by value, and when we pass an object's reference, it's actually going to take a copy of that reference, which is going to point to the same object. Let's try that. We already did this in the function section, so we already ran this example also in the function section, so nothing new over here. Passing in functions. Let's make something like this, and then functions friendly. In the previous lecture, we did about lectures now. One more thing, we talked about arrays for toString and how you can modify. One more thing I want to share is function example. Now one more thing, we are talking about references, objects, and all these things for so many lectures now. Let's try to see how these things behave in functions. In the previous lecture, we did about we learned about functions, and we also learned how data types and reference variables are passed into functions. In Java, there's only call by value, and when we pass an object's reference, it's actually going to take a copy of that reference, which is going to point to the same object. Let's try that. We already did this in the function section, so we already ran this example also in the function section, so nothing new over here. Passing in functions. Let's make something like this, and then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array of let's say AR or whatever, and saying the 0th index, change it to 99. Let's say I create an original index array over here, integer array. It's called nums. That takes something like index and like section that. We already did this in the function section, so we already ran the same object. Let's try that. We already did this in the function section, so we already ran this example also in the function section, so nothing new over here. Passing in functions. Let's make something like this, and then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array of let's say AR or whatever, and saying the 0th index, change it to 99. Let's say I create an original index array over here, integer array. It's called nums. That takes something like 3, 4, 5, and 12 or whatever. I'm saying print this. I'm saying print arrays dot toString nums. Obviously, it's going to print 3, 4, 5, 12. But after that, I'm saying change the value of the 0th index via this method. So just pass this nums array in the method. What is going to happen over here? Let's look at our diagram. Let us look at the diagram. What is going to happen over here? We have done this many times. You might be aware of it already now. So basically, initially we have something like this. So we have nums, reference variable, point, passing in functions. Let's make something like this, and then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array void in functions. Let's make something like this, and then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array of let's say ARR or whatever, and it's saying the 0th index, change it to 99. Let's say I create an original index array over here, integer array index, and then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array of let's say ARR or whatever, and it's saying the 0th index, change it to 99. Let's say I create an original index array over here, integer array. It's called nums. That takes something like 3, 4, 5, and 12 or whatever. I'm saying print this. So I'm saying print arrays dot toString nums. Obviously, it's going to print 3, 4, 5, 12. But after that, I'm saying change like 3, 4, 5, and 12 or whatever. I'm saying print this. So I'm saying print arrays dot toString nums. Obviously, it's going to print 3, 4, 5, 12. But after that, I'm saying change the value of the 0th index via this method. So just pass that I'm string
nums, obviously it's going to print 3, 4, 5, 12. But after that, I'm saying change the value of the 0th index via this method. So just pass this nums array in the method. What is going to happen over here? Let's look at our diagram. Let us look at the diagram. What is going to happen over here? We have done this many times. You might be aware of it already now. So basically, initially we have something like this. So we have nums, reference variable pointing to an object of array like this, which is 3, 4, 5 and 12. Then the copy of this reference variable is passed in the function. Let's say the name of the reference variable in the function. What is the name of the reference variable in the function? ARR, but it's pointing to the same object. कितने बंदे ऑफलाइन है 386 और कौन ऑफलाइन बोल गया भयंकर It's gonna be okay. Everyone needs a baby. Remember you told me you're not alone. And what am I doing in the function? In the function I'm doing ARR of 0 is equal to 99. Means this object's 0th index should be changed to 99. Isn't now the original value being changed? Right. The original one is also changed, right? Because both of these are pointing to same object. This is known as mutability, mutable behavior. Okay, so strings are immutable in Java. And arrays are mutable in Java. Mutable means, in simple language, you can change the object. Passing in functions. Let's make something like this. And then I can just say public static void main. I can create a function over here, static void change. It's taking an integer array of, let's say, ARR or whatever. And saying the 0 एक स्टैटिक वर्ड बनाया मतलब वही चेंज नाम का index change, जिसमें मैं इनपुट एरे जिसमें मैं इनपुट दे सकता हूँ ARR उस ARR की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ. ठीक, अंदर आया. मैंने पहले ही बोल दिया कि जो ये है ARR 0 उसकी वैल्यू 99 ही होगी. ठीक, फिर क्या कर रहा हूँ, ऊपर का देखते हैं. इसने पहले प्रिंट करा दिया पहले वाले एरे को 3 4 5 बार, चेंज किया नम्स, कुछ भी कर अभी भी तो वही प्रिंट होगा सेम 3 4 5 बार. क्यों change it to 99. Let's say I create do not alone, yeah. Debug. You told me you were not alone.
चेंज क्या किया मेरे को create an नहीं original समझ index array over here, integer array. It's called nums. That takes something like 3, 4, 5, and 12 or whatever. I'm saying print this. So I'm saying print arrays dot toString nums. Obviously, it's going to print 3, 4, 5, 12. But after that, I'm saying change the value of the 0th index via this method. So just pass this nums array in the method. What is going to happen over here? Let's look at our diagram. change nums मैंने बोल दिया कि चेंज वाला जो स्टैटिक वर्ड है उसमें मैं नम्स की वैल्यू एज ए इंटीजर डाल दूंगा Let us look at the diagram. What is ओके देन मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ साउथ एक सेकंड में इसी को पेस्ट कर देता हूँ नम्स same old stories na 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 some nights I don't feel going to happen over here? We have done this many times. You might be aware of it already now. So basically, initially we have something like this. So we have nums, reference variable pointing to an object of array like this, which is 3, 4, 5, and 12. Then the copy of this reference variable is passed in the function. Let's say the name of the reference variable in the function. What is the name of the reference variable in the function? ARR, but it's pointing to the same object. अबे जैसे मैं वो करता हूँ मैं यहाँ पे नीचे में हूँ तो मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं चेंज नम्स चेंज वाला जो ये है ऑब्जेक्ट इसमें मैं नम वाला जो एरे है इसकी वैल्यू नम्स वाले की वैल्यू इसमें डाल दूंगा चेंज नम्स फिर बोल देगा नम्स को प्रिंट कर तो नम्स के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई नम्स के अंदर जो ARR की वैल्यू थी वो इसमें आ गई मेरे पास एक वैल्यू थी And what am
अरे भाई
चलो गाइस बाय बाय, अपन कल मिलते हैं। आज के लाइव के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, पीस आउट, बाय बाय, पीस आउट, पीस आउट।